Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will talk about a relatively new topic which is prompt engineering. I'm sure कि आपने ये term recently काफ़ी सुना होगा. So basically to generate the responses from any AI models, especially अगर वो generative AI model हो like OpenAI का ChatGPT हो या फिर Google का Gemini हो या फिर Meta's का LLaMA हो, there are many ways in which you can ask the questions and you can get the responses from these models. और ये जो responses हैं इसका यूज़फुलनेस, इसका एक्यूरेसी, इसका बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट काफ़ी हद तक डिपेंड करता है द वे वी आर गोइंग टू आस्क दिस क्वेश्चंस। और हम लोग इसी वीडियो में इसी को कवर करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच यू कैन आस्क द क्वेश्चंस एंड विल कंपेयर द रिस्पॉन्सेज फ्रॉम दीज मॉडल्स। सो स्टार्टिंग के लिए लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि व्हाट एग्जैक्टली इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो बेसिकली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड रिफाइनिंग द क्वेश्चंस और स्टेटमेंट। तो इसी को हम लोग प्रॉम्प्ट कहते हैं, सो दैट वी कैन गिव दिस क्वेश्चंस एंड स्टेटमेंट टू द एआई मॉडल्स एंड गेट द एक्यूरेट एंड यूजफुल रिस्पॉन्स फ्रॉम देम। तो इट इज जस्ट लाइक अ फिगरिंग आउट कि व्हाट इज दैट बेस्ट वे टू आस्क द क्वेश्चन सो दैट कि एआई मॉडल हमारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ जाए और गिव्स अस द एंड गिव अस द accurate answers for our questions or for our prompts. So let's take an example here. तो बेसिकली अगर मैं सिंपल एक एग्जांपल में लेफ्ट साइड में इफ़ यू सी आई एम आस्किंग कि राइट अ पोएम, तो यहाँ पे उसने एक पोएम को जनरेट किया है यहाँ पे चैट जीपीटी ने। बट सेम प्रॉम्प्ट इफ़ यू सी द राइट साइड वेयर आई एम आस्किंग कि राइट अ पोएम अबाउट रेनी सीजन इन शेक्सपियर स्टाइल, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस लेफ्ट वाले साइड में और राइट वाले साइड में देर आर few differences the way it has written कि यहाँ पे pond the sullen sky and drops the heavenly tears, all of these are Shakespeare style about just about the rainy season and यहाँ पे simple एक poem लिखा गया है। तो this is how you can basically write the prompts, the way you can write the prompts. So now what we'll do is we'll try to cover कि what are those different techniques in which you can write the prompts, and there are many ways actually, but इस वीडियो में हम लोग top 5 techniques को cover करने वाले हैं। First understand key what exactly is zero shot prompting. So whenever we are forming our prompt without any context or example and asking the AI model to perform a task or generate the response for that, so those kind of prompts are called as zero shot prompting. So for example, अगर मैं बोलूँगा कि simply translate this particular sentence into this language, so let's say translate hi how are you in Hindi. So without giving any example, I have just asked the model to kind of translate that. And whenever you have a very straightforward task like translation and all those things, so in those cases you can simply use this zero shot prompting. Zero shot prompting का ही little advanced prompt है which is few shot prompting where you give some examples as well कि translate this sentence in Hindi and example में दे देंगे कि hi how are you को नमस्ते आप कैसे हैं, thank you को धन्यवाद, and then asking them to kind of a different sentence कि translate this taking the reference from the above two examples. So basically just a few example you can give to your prompt and then ask the model to kind of refer to that example and kind of give us the similar responses which you have generated, which you have given the example for. Then there is a chain of thought prompting where you kind of break down your prompt into multiple steps and then asking the question from the GPT model. So what we'll do is we'll just simply giving you an overview and then we'll try to go through each one of these techniques and then see how OpenAI ka ChatGPT performs for each kind of prompting. Then there are two more kind of prompting techniques which is contextual and role playing. So whenever you kind of provide any background information ki this is your background information for this prompt and then give me that answer for that particular thing. So basically we'll simply say ki consider that you are a teacher of this particular school and then now give me the answer of this particular subject. So basically हम लोग क्या कह रहे हैं कि you are a teacher of science and then give maybe basically teach me what is photosynthesis. So in those cases we'll simply say कि हाँ एक context provide कर रहे हैं, एक background provide कर रहे हैं prompt AI model को and then asking that question. Then there are some role playing prompts where you can give a character or persona to your large language models, AI models, and then you can ask the question. So basically let's say कि you can also ask कि consider that you are a prime minister of India and now answer these questions. So basically हम लोग क्या कर रहे हैं, एक role को provide कर दे रहे हैं and then we are asking that question from that particular role. So having said that, now we will move on to the examples of each of these prompting techniques and then we'll see how ChatGPT performs for each of them.
Alright, so now it's the time to test our hypothesis about the prompting. So first we'll start with this zero shot where I'm asking a question from ChatGPT that kind of recommend a book for someone who is interested in learning about stock market, and we'll see what is the response which we get from the ChatGPT model. तो यहाँ पे हमें जो है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का काइंड ऑफ रिकमेंडेशन विच वी हैव गॉट फ्रॉम जीपीटी, एंड इफ़ यू सी दिस पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट, तो हमने यहाँ पे कोई भी एग्जांपल को नहीं दिया है, सिंपली एक क्वेश्चन को पूछा है एंड वी एज्यूम कि जीपीटी ऑलरेडी नोज की व्हाट इज स्टॉक मार्केट एंड व्हाट इज दैट फेमस बुक अबाउट द स्टॉक मार्केट. तो नाउ व्हाट विल डू इज विल ट्राई आर फ्यू शॉर्ट एग्जाम्पल एज वेल. तो फ्यू शॉर्ट के लिए दिस ट्रांसलेशन वाला एग्जाम्पल है. नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर इज़ कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू हिंदी, और यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है हेलो हाउ आर यू को नमस्ते आप कैसे हैं, आई एम फाइन को थैंक यू को मैं अच्छा हूँ धन्यवाद. नाउ आफ्टर दिस आई एम आस्किंग कि बेस्ड टेकिंग दीज एग्जाम्पल्स ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस टू हिंदी. गुड मॉर्निंग हैव अ नाइस डे, and we'll see ki how GPT model kind of takes the example from whatever the example which you have given here, and using this example it will reference its knowledge and give you that response ki suprabhat aapka din mangalmay ho is what is the kind of translation of good morning have a nice day. Then we will move on to the third technique which is your kind of chain of thought. तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि वही सेम वे रिकमेंड द बुक वाला ही एग्जाम्पल को ले रहे हैं, एंड देन हेयर व्हाट वी आर सेइंग that recommend a book for someone who is learning about the stock market, and then we are breaking down our kind of the prompts which we are given. सबसे पहला स्टेप में identify the popular books and then evaluate the key concept of strategies सारे बुक में, then consider the target audience का level, knowledge का level, and then investment goals, and then propose a book recommendation based on the evaluation and the audience considerations. तो यहाँ पे क्या हुआ, सिंपल सा एक बुक को रिकमेंड किया, बट इन केसेस आई वांट जीपीटी मॉडल को कि आप जितने भी बुक्स हैं सबको काइंड ऑफ इवेल्युएट करो बेस्ड ऑन माय नॉलेज एंड बेस्ड ऑन द ऑडियंस इन्वेस्टमेंट गोल, रिकमेंड करो बुक को. तो अगर हम लोग इसको ट्राई करेंगे then you will see the magic कि step by step whatever the step which you have given here. So if you see the simple thing, simple straightforward response which you get, but in chain of thought में यहाँ पे step by step जो है सबसे पहले आइडेंटिफाई कर रहा है पॉपुलर बुक्स को कि दिस आर द फ्यू पॉपुलर बुक्स विच आर देयर. देन स्टेप 2 में इसने काइंड ऑफ सारे का जितने भी बुक्स है उनका इवेल्युएट कर रहा है कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का क्या की कॉन्सेप्ट है, स्ट्रैटेजी क्या है, रैंडम वॉक डाउन द वॉल स्ट्रीट का क्या है, और जितने भी बुक हैं रिच डैड पुअर डैड का क्या की कॉन्सेप्ट एंड स्ट्रैटेजीज है. एंड देन जैसा कि हम लोगों ने स्टेप 3 में पूछा था कंसिडर द टारगेट ऑडियंस लेवल ऑफ नॉलेज, तो यहाँ पे थर्ड में हम लोग देखेंगे कि बिगनर्स के लिए ये है, इंटरमीडिएट के लिए ये है, एडवांस इन्वेस्टर के लिए ये है, एंड देन प्रपोज अ बुक. देन बेस्ड ऑन दैट इट हैज़ प्रपोज्ड अ बुक विच सेज कि द लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग बाय जॉन सी बोगले इज़ हाईली रिकमेंडेड. तो you will see ki this is how the prompt and then the response which you get from the GPT models, just changing your kind of the prompt which you have. Now we'll also see ki other two prompting technique which is contextual and kind of the role playing. तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पे एक prompt लिखा हुआ है. तो contextual में मैं क्या कह रहा हूँ कि recommend a book for someone who is interested in learning about the stock market for both fundamental and technical aspect. तो यहाँ पे मैंने कॉन्टेक्स्ट को प्रोवाइड किया है कि मुझे फंडामेंटल भी पता करना है और टेक्निकल भी पता करना है किसी भी स्टॉक के बारे में, देन मैं कौन सा बुक को रेफ़र करूं. तो इफ़ आई सी नाउ हेयर, इफ़ आई काइंड ऑफ रन दिस, देन हेयर विल सी कि बेस्ड ऑन दिस कॉन्टेक्स्ट इसने फिर मुझे अलग अलग बुक को काइंड ऑफ रिकमेंड किया है, एंड देन कॉम्बाइंड रिकमेंडेशन को भी इसने काइंड ऑफ मुझे काइंड ऑफ रिकमेंड किया है, and there is also a final recommendation for that. So this is how this contextual, basically you can provide any background and कि someone who is interested in learning about fundamentals and technical aspect, तो ये हमने इसको background दिया और based on that background and we are asking any question. Then one more technique which is the role playing कि as a financial advisor now you recommend me a book. तो एज अ फाइनेंशियल एडवाइज़र कि कंसिडर योर सेल्फ एज अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, रिकमेंड अ बुक फॉर बिगिनर इंटरेस्टेड इन लर्निंग अबाउट द स्टॉक मार्केट. एंड देन सो जस्ट दैट हम लोग यहाँ पे एक रोल का साइन कर दिए हैं इस वाले प्रॉम्प्ट में, एंड नाउ आवर मॉडल, दिस AI मॉडल विल वर्क बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर रोल.
So these are the few examples, and using these examples you can basically explore multiple techniques, multiple ways, and then you will see that the magic happens in the output generation of these your AI models, which generative AI models which are there. All right, so that's it for this particular video. So please don't forget to like this video, leave a comment and let me know कि आपको ये video कैसा लगा, and also share this video with your friend जिनको कि ये video पसंद आएगा, and do try out the techniques which I have told you and see कि what is that difference in responses which you are getting, and let me know all your experiences in the comment sections. Thank you so much. See you in the next video.